My screen is visible to everybody. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Hmm. ma'am, yesterday you discussed a sum of a section of surface area cut by a plane in a cylinder. You explained that in that case it would not be multiplied by 2. Can you please explain that again? सिर्फ एक ही सेक्शन, जो प्लेन का सेक्शन है जो कट रहा है, तो खाली एक ही तो निकालोगे, एक ही तरफ से तो प्लेन काटेगा। हमें प्लेन का सरफेस एरिया निकालना है जो सिलेंडर को कट कर रहा है। In that case, we should consider both sides of the plane which is in section of the cylinder. बोथ साइड क्यों कंसिडर करेंगे, एक ही साइड तो कट करेगा, वो सरफेस एरिया जो कट कर रहा है। Start with the new. And like in the surface area of the sphere, Next. in that case we multiplied it by 2. Of a curve. Your voice is breaking. बोल Ma'am, your voice is breaking. Ma'am, your voice is breaking. Network. It's not clear. अब आ रही है आवाज?
Yes, ma'am. Now it's हो clear. रहा है Okay, right. मैम इको हो रही है। मैम इको हो रही है आपकी आवाज Find the length of the arc of मैम इको हो रहा है मतलब बोल रही है तब मैम इको हो रहा है बहुत ज्यादा मैम एक Yes, बार ma'am. नहीं 2-3 बार आ रही 3 है। बार रिपीट हो रहा है मैम। अब दे रहा है। हेलो। यस मैम। यस Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. Now it's clear. यस मैम नाउ इट इज फाइन Now it's better. Right, find length of the arc of the parabola y square is equal to 4 of the line y is equal to 8x. So योर वॉइस इज अगेन ब्रेकिंग मैम this is the parabola, and suppose this is the line. This is the line. Py is equal to 8x, and this is the parabola. So first of all, find out the point of intersections of the parabola and the मैम line. 9/16 और 3/2। ठीक है, so x is equal to 0 और 9a/16 पे these are the points of intersection. Now you have the formula which we studied yesterday using x is equal to 4ay. X is a function of y. Using this formula, there it will be more easy to solve because x is equal to y square by 4a. This is more easy. So find out the arc length by this. निकालो जल्दी से इसी से dx by dy निकाल लो. निकालो जल्दी से अपने आप. We have ya is equal to 4ax. So 2y dy by dx is equal to तो dx by dy कितना हो जाएगा?
root x by under root y by 2a. y की वैल्यू भी तो रखो, Yes, ma'am. जरूरी नहीं है y by 2a ही रहने दो, इजी रहेगा. This is y by 2a, ठीक, because we'll integrate with respect to y, it will become more easy. Dx by dy. Now the length will be, now in this case you have to find the limits for y, sorry, the points of intersections for y, because here you calculated for x, मैम 3a calculate by for 2. y also. 0 and 3a by 2. ठीक है, 0 and 3a by 2. So from 0 to 3a by 2 under root of 1 plus y upon 2a dy. Y square upon 4a square. dx by dy का whole square था ना? Yes, This ma'am. will be y square upon 2a का whole square. Now you can calculate this integral. ठीक है, आ जाएगा ना अब? इसका आंसर आएगा, सब्स्टिट्यूशन करोगे जब, और तो log of sec थीटा प्लस tan थीटा करना, सब्स्टिट्यूशन आएगा. एंड इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 36.8 लिमिट रखोगे, जो भी आंसर आएगा अपना निकाल लेना. हम उससे भी नहीं कर सकते मैम, जो फॉर्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, उससे डायरेक्ट बन जाएगा मैम. वैसे कर लो डायरेक्ट, आंसर जो आए बता दो. तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. फाइंड द पेरीमीटर. Ma'am, what is the final Of answer of the- previous? बताओ कितना आया, हमने निकाला नहीं है. Oh, it is coming 15a by 16. 10 बस आ रहा है 15, क्या बोला? 15 आगे बोलो. by 16 By 16. 15 A. by 15a 16. by 16. Yes. a 15a by 16 सबका यही आ रहा है. 2-3 लोगों का अगर ये आ रहा है तो यही होगा फिर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द hypocycloid whose parametric equation. Now I am using each and every formula which I have written for the length of the curve. Parametric equation is x is equal to a cos cube theta and y is equal to b sin cube theta. So this is the parametric equation for this hypocycloid. Now what is a hypocycloid first? Now this is a closed curve. This is a hypocycloid. This is 0 and this is a. So
x is given to be a cos cube theta, so you can find out dx by d theta from here. This is minus 3a cos square theta sin theta. Similarly, dy by d theta you can find out 3b sin square theta cos theta. See? So the maximum values for x are when cos theta is equal to 0, this is a, and when theta is equal to pi by 2, this is 0. So the limits of x are from 0 to a, so the limits of theta are from 0 to pi by 2, as x limits कहाँ से होंगी 0 to a. ठीक, we'll use it in the formula. Now length is what? Under root of dx upon d theta whole square plus dy upon d theta whole square d theta. ठीक, this is the length, and theta varies from where? From x is equal to 0 to x is equal to a पे है, तो x is equal to 0 कब होगा? जब थीटा पाई बाई 2 होगा. ठीक, and x is equal to a कब होगा? जब थीटा equal to 0 होगा. So this is varying from pi by 2 to 0. ठीक, और ये जो हमने निकाला, what this we have calculated, this is one arc length. This is the arc length of this, and we have to find the perimeter. That is, we have to find this side also. So what will be this side? Times of this. Clear to everybody? लास्ट में अगर हमारे पास माइनस आएगा तो हम उसे प्लस कर लेंगे. नहीं आया तो कुछ. Ma'am. Oh, this is symmetric about y-axis. That is why. हाँ, this is symmetric about y-axis. That is why we found the arc length of one arc and then we double it. Now you put all the values and calculate this integral. So this is minus 0 to pi by 2 and 2, and you get under root of under 9a square cos की power 4 theta sin square theta plus b square sin 4 theta cos square theta d theta. So this is the formula you are just putting, and when you are calculating the length, you are calculating the length from here to here. So this is from x is equal to 0 to x is equal to a. So when x is equal to 0, what is the limit for theta? Pi by 2. And when x is equal to a, what is the limit for theta? 0. So therefore, we are putting the limits from pi by 2 to 0. मैम सो ये जो लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है शेप में? नहीं, हमें बस खाली इतने का निकालना है यहाँ तक. बट वो एक्चुअल में शेप में इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं है. ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो. ये करना तुम लोग अपने आप, जो आएगा वो हम लिखे दे रहे हैं. तो b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस
सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे आपको साइन थीटा कॉस थीटा के लिए। अब कॉस स्क्वायर आएगा अगर, तो उसको यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये कॉमन ले सकते हो। तो इसे बाहर लोगे तो अंदर जो कॉस स्क्वायर वाला टर्म बचेगा उसमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना, और साइन 2 थीटा को भी साइन स्क्वायर थीटा में भी इसी तरह लगाना कॉस 2 थीटा वाला, तो कर लोगे आराम से। ये आएगा आंसर आपका लास्टली। यहाँ पे हमें एक नेगेटिव साइन मिल रहा है, so I'm writing the negative sign, and depending upon the values of A and B, we'll choose the positive sign for the length of the curve. मैम इसको तो सिंपली भी कर सकते हैं ना, मतलब ऐसा कुछ, इसको सिंपली क्या? भी तो कर सकते हैं। 9 कॉमन ले लेंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन में बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। उससे हो जाएगा मैम, एक मतलब हाफ से हो गुणा जाएगा तो करेंगे। करो ना, वही तो कह रहे हैं पूछने को। ऐसा आंसर नहीं आ रहा ना मैम, उससे अजीब सा आ रहा है। तो वो तो सिंपल ही आ रहा है उसमें तो। मैम ए कैसे और आ बी रहा है है यहाँ पे, सिंपल? मैम ए और हाँ बी है तो यहाँ पे, ए, वो वन नहीं होगा वो, जो वन कह हाँ रहे हैं मैम। आ गया, ऐसे ही आएगा आंसर। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो दोनों को कॉमन कैसे ले लोगे? चलो एक और एग्जांपल लिखो, को करना अपने आप से। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व r is equal to a cos cube theta by 3. Now this is for Ma'am, uh, in the final answer, we will take the mod value, so as the perimeter will have to be positive. मॉड वैल्यू। अब a और b की वैल्यूज तो आपको पता है नहीं, तो जो आ रहा है वही लिख दिया है। अब जो भी a और b की वैल्यूज होंगी वो हम उस हिसाब से, जो भी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है क्योंकि कॉस पेरीमीटर है। Yes, ma'am. This a to the power 4 b to the power 4 expression will always be positive. That is it. नहीं, a to the power 4 will be positive, b to the power 4 will be positive, and what about this? ये तो माइनस है ना, तो ये जो अंदर वाला है ये डिपेंड करेगा ना, कि अगर मान लो ये पूरा माइनस दे रहा है तब Oh, फिर no, we तब can तो ठीक है, factorize it, that a square minus b square whole square plus a square b square. वो अपना कर लेना। Okay, the final answer has to be positive. Now coming to the parametric this polar equation। पोलर इक्वेशन में क्या फॉर्मूला था हमारे पास लेंथ ऑफ द कर्व का? व्हाट वाज द फॉर्मूला? r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, एंड थीटा की लिमिट्स रखनी है, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। ठीक, तो you can see from here that the maximum value of r, now this is the curve, the maximum value of r will be minimum value will be 0 and the maximum value will be a, because cos involved है, तो cos की maximum value 1 और minimum value 0। ठीक, तो r is equal to 0 पे हमें पहले लिमिट्स निकालो थीटा की क्या होगी। r is equal to 0 पे हमें थीटा बाई 3 पाई बाई 2 मिला, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, एंड r इज इक्वल टू a पे हमें थीटा बाई 3 इक्वल 0 मिला, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। तो लिमिट्स वेरी करेंगी फ्रॉम 3 pi by 2 to 0, or you can write 0 to 3 pi by 2. The negative sign doesn't matter because we are calculating the length of the arc.
ठीक, दोनों करके दिखा दिए. Either you write 3 pi by 2 to 0 as we have done in the previous example, or you can write 0 to 3 pi by 2. The sign will not matter. Now you put the values of r square and dr by d theta, the whole square, and then you calculate the length of the arc. ठीक, करो, ये तो इजी है, कर लोगे. 3 pi by 4. हाँ, 3 pi a by 2. 4 नहीं आ रहा है. Okay, ma'am, into 2, yes. So length is coming to be 3 pi a by 2. Now coming to Dirichlet integrals. Let C be a closed region in the first octant of R cube, bounded by the surface x by a की पावर p plus y by q की पावर y by b की पावर q plus z by c की पावर r is equal to 1, and the coordinate planes. Then the integral of the form for the region tree x की पावर अल्फा minus 1, y की पावर बीटा minus 1, z की पावर गामा minus 1, dx, dy, dz. This is called the Dirichlet integral. ठीक? So you can have different values of p, q, r. So you have different curves, and for different curves, if you calculate this integral for different values of p, q, r, this is called the Dirichlet integral. Is called a Dirichlet integral, where all the constants alpha, beta, gamma, p, q, r are assumed to be positive. And I is equal to a की पावर अल्फा, b की पावर बीटा, c की पावर गामा upon p, q, r into gamma function of alpha by p, gamma function of beta by q. This is the value of the integral. You can directly find by this formula. Gamma function of r by gamma. This is small r by gamma. Alpha, beta, gamma. Sorry, ऊपर gamma होगा, ऊपर gamma होगा, नीचे r होगा. So this is gamma and this is small r. Differentiate कर लेना, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं. Upon gamma function of alpha by p plus beta by
क्यू प्लस गामा बाई आर प्लस 1। ठीक, तो ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, बस खाली अपने इंटीग्रल से अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी होगी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Evaluate the Dirichlet integral I is equal to x cube y cube z cube dx dy dz. Now you have to calculate this over the region T, where T is the region in the first octant. Now this is the region of Dirichlet integral, bounded by the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 and the coordinate planes. So we have the same situation as in the case of Dirichlet integral. So we can apply the formula, direct formula for calculating the Dirichlet integral. Now you compare this integral. So comparing with Dirichlet integral with standard form of Dirichlet integral, what we get the value of alpha beta gamma? Alpha beta gamma तीनों 4 है. And what are the values of PQR? 2. And what are the values of ABC? 1. 1. तो calculate the value of the integral. निकाल लो, क्या जाएगा? 1/8 gamma 2 whole cube upon gamma 7. So 1/5040. 1/8 into 1/6 factorial. है ना, गामा n plus 1 is n factorial. We are using this formula. This is 1/5760. So what is gamma? How can I use gamma function? गामा फंक्शन नहीं पढ़ा है तो पीछे जाके खुद से पढ़ो, बिकॉज ये पढ़ाया जाता है आप लोग को इंटीग्रल। ये तो आगे आएगा हैं? आप लोग इसे इंटीग्रल, हाँ है, बीटा एंड गामा फंक्शन है, पर गामा फंक्शंस आप लोग यूज कर चुके हो क्लास 11-12 में। नो मैम। नो मैम, मैम नहीं पढ़ाया जाता मैम, एनसीईआरटी नहीं, ये सब नहीं पढ़ा है मैम। नहीं पढ़ा है वो, अभी ये समझ ले। और आगे कैसे होगा यूज उसको हम लोग आगे, व्हाट इज गामा फंक्शन वो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक, तो गामा n plus 1 is n factorial, तो 1 2 you can write 1 plus 1, so this will be 1 factorial here, and similarly gamma 7 will be 1 plus 6, so this will be 6 factorial. This formula we are using. गामा फंक्शन इंटीग्रल्स कैलकुलेट करने में बहुत यूज होता है, और पता नहीं कैसे नहीं पढ़ा, आईआईटी जेई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्स में ये है भी। नहीं है मैम, इस बार नहीं होगा था। नहीं ना पढ़ा हो, पर कोचिंग में तो जरूर पढ़ाया गया होगा। नहीं मैम, नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो आप खुद
खुद से पढ़ नहीं है। सकते हो अपने आप से। मैम हो सकता है वो हम लोग के सिलेबस रिडक्शन में हट गया। हो सकता है हट गया हो, पर वो आप खुद से पढ़ सकते हो। कि आज से पहले किसी भी बैच ने ये नहीं बोला कि हमें गामा फंक्शन नहीं पढ़ाया गया। इवेल्युएट आई इज इक्वल टू x की पावर हाफ, y की पावर हाफ, z की पावर हाफ, dx dy dz, where t is the region in the first octant bounded by the plane x plus y plus z is equal to 1 and the coordinate axis. ठीक, so again the situation comes for Dirichlet integral. So what are the values of alpha, beta, gamma here? 3/2. 3/2 PQR की क्या values हैं? 1 1 1 प्लेन 1. ABC की क्या values हैं? 1 Again 1. Now you calculate the integral I. So I is gamma P/2 whole cube upon gamma half 11/2. ठीक, अब यहाँ पे इसमें आ गया, तो this was when n was an integer. Now when n is not an integer, this is of this form, तब हमें क्या मिलता है? गामा की वैल्यू, जिसने नहीं पढ़ा है, this is equal to alpha gamma alpha. ठीक, and gamma half is equal to under root of pi. So now इसे तोड़ो तो कैसे मिलेगा ये? This will be half gamma half पर मिला, और नीचे क्या मिलेगा? 9/2 गामा 7/2. ठीक, फिर 7/2 को फिर तोड़ोगे, 11/2 कैन बी रिटन एज 1 + 9/2. ठीक, तो यहाँ से ऐसे भी निकलेगा, फिर 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इस तरह निकलता चला जाएगा, into half and then gamma half. So gamma half and gamma half gets cancelled, and no, this is whole cube, तो कैंसिल नहीं होगा. हाँ, एक गामा हाफ कैंसिल होगा, and you get the answer as 4 pi upon 945. ठीक है ना, क्लियर है सबको? ठीक, ये कैसे कर रहे हो? क्लियर है? दिस कैन बी रिटन एज 1 + 9/2, so you get it as डेफिनेशन दिखा दीजिए एक बार। हम्म, डेफिनेशन दिखा दीजिए डिरिचलेट इंटीग्रल की। फॉर्मूला अभी भेज देंगे तुम लोग के पास. के ऊपर मैम के स्टार्ट में इसके भी ऊपर चलो भेज देंगे तुम लोग के पास, हैं?
अब क्लास लीव करो, टाइम ऑफ द क्लास है now. This is the end of your unit 3 and we will start unit 4 beta and gamma functions from Monday. So I'm not starting now because no use. मैम No. हाँ. बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं मैम वो Ma'am, tomorrow we will be having math tweet classes. बताओ क्या करना है? क्वेश्चंस पूछने हैं ट्यूट क्लास के लिए? असाइनमेंट 4 सॉल्यूशन। असाइनमेंट 4 का टाइम अप हो गया है? यस हमने मैम। सोल्यूशन असाइनमेंट दिया था कल। असाइनमेंट 5 का हो गया है शायद। भेज तो दिया है सोल्यूशन कल असाइनमेंट 4 का, देखा नहीं? Ma'am, can you confirm math quiz timing? मैथ क्विज टाइमिंग वही It's 10 to 10:30 रहेगी। क्या प्रॉब्लम है? सैटरडे को है 10 to 10:30। हम कितने क्वेश्चंस आएंगे? जितने पिछली बार थे उतने ही होने चाहिए। पेपर तो हम बना नहीं रहे हैं तो हमें पता भी नहीं है कुछ। बट मैम ये चैप्टर्स के तो सॉल्यूशंस बहुत लेंदी है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत बड़े सबके साथ वही रहेगा ना, पूरे ग्रुप के साथ वही रहेगा और ऐसे क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे जो आप सॉल्व कर सको और आप बुक खोल के देख सकते हो, ये भी माना जा रहा है। तो मैम बुक खोल कर देखेंगे तो 30 मिनट में 5 क्वेश्चन भी नहीं बचेंगे। उतना ही निकल जाता है। बुक खोल के एक भी नहीं होगा मैम। अब भाई हम क्या करें, हमारे ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है बिकॉज क्वेश्चन पेपर जो बना बढ़ा दीजिए मैम। आप टाइम तो इंक्रीज कर सकती है ना।